गतकक्षायां वयं सर्वे पठितवन्तः यत् विश्वं भवति, विश्वं तु प्रकृत्यात्मकमस्ति, सर्जनात्मकमस्ति। प्रमाणमीमांसया विश्वस्य बुद्धिस्थीकरणं भवति, बुद्धिस्थीकरणं भवति प्रमाणमीमांसया। प्रमाणमीमांसायाः तात्पर्यं प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दश्च अन्यानि अपि प्रमाणानि वर्तन्ते, यथा अर्थापत्ति, अनुपलब्धिश्च। बुद्धिस्थीकरणं यदा विश्वं भवति तर्हि व्याकरणेन, भाषाविज्ञानेन वा तस्य विश्वस्य भाषायां परिवर्तनं भवति। तादृशं विश्वं भवति भाषिकं विश्वम्। आंग्लभाषायाम् उच्यते लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। पुनः भाषात्मकं यत्किमपि विश्वं भवति तर्हि तस्य विश्वस्य लिंग्विस्टिक वर्ल्ड भाषात्मकं विश्वम्। भाषात्मक विश्वस्य अभिव्यक्तीकरणस्य आवश्यकता भवति, अभिव्यक्तीकरणस्य आवश्यकता भवति। तर्हि भाषात्मकं विश्वम् अभिलक्ष्य आधारीकृत्य आश्रित्य वा ज्ञान परंपरा समुत्पन्ना भवति, ज्ञान परंपरा समुत्पन्ना भवति। ज्ञान परंपरायाः आधारः भाषात्मकं विश्वमस्ति। ज्ञान परंपरा अपि द्विविधा वर्तते, द्विधा वा वर्तते। एका परंपरा भवति पाश्चात्य ज्ञान परंपरा, पाश्चात्य ज्ञान परंपरा। पाश्चात्य तकारद्वयं भवति। पाश्चात्य अस्मिन् शब्दे तकारद्वयं भवति। तर्हि पाश्चात्य ज्ञान परंपरा। अन्या परंपरा अस्ति भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रश्नः भवति उभयोः परंपरयोर् मध्ये के भेदाः वर्तन्ते? What are the differences between Occidental knowledge traditions and Oriental knowledge traditions? एकः भेदः अस्ति, इयं परंपरा लिखित परंपरा अस्ति, लिखित ज्ञान परंपरा अस्ति। This is written tradition. It has originated from the writing. परंतु भारतीय या ज्ञान परंपरा अस्ति, सा परंपरा मौखिकी ज्ञान परंपरा अस्ति। मौखिकी ज्ञान परंपरा। मौखिकी ज्ञान परंपरा। आद्यंत संहिता ज्ञान परंपरा। आद्यंत संहिता इयं ज्ञान परंपरा।
ज्ञान परंपरा आद्यंत सहिता वर्तते, आदि अंत सहिता वर्तते। इत्यस्य को अर्थः फ्रॉम व्हिच पीरियड, फ्रॉम व्हिच प्लेस, from which person this knowledge tradition has been originated, we know, and this knowledge tradition has end also, that also we know. Therefore this पाश्चात्य ज्ञान परंपरा आद्यंत संहिता ज्ञान परंपरा अस्ति, भारतीय या ज्ञान परंपरा अस्ति आद्यंत रहिता ज्ञान परंपरा अस्ति। अस्याः परंपरायाः उद्भव स्थानं किम्, उद्भव स्थानं किम्, अस्य को अस्ति अन्तः इति वयं न जानीमः। आद्यंत रहिता, विदाउट नोन बिगिनिंग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन and with non-beginning intellectual tradition means मौखिकी ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा अस्ति, सा ज्ञान परंपरा पुत्र समुत्पन्ना अभूत्। तस्याः ज्ञान परंपरायाः आविष्कर्ता कः, कस्मिन् काले इयं ज्ञान परंपरा समुत्पन्ना अभूत् इति वयं सर्वे न जानीमः। अस्मात् कारणात् भारतीय इयं ज्ञान परंपरा आद्यंत रहिता ज्ञान परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषायां पारिभाषिक शब्दावल्यां वयं सर्वे वक्तुं शक्नुमः इयं परंपरा सनातनी परंपरा अस्ति। सनातनी परंपरा इत्यस्य तात्पर्यम् इटर्नल नॉलेज ट्रेडिशन। सनातनी, सनातनी परंपरा, सनातनी परंपरा इत्युक्ते, सनातनी इत्युक्ते इटर्नल, नित्य ज्ञान परंपरा अस्ति। नित्य ज्ञान परंपरा वर्तते, सनातनी चिंतन परंपरा अस्ति। भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् भारतीय ज्ञान परंपरायाः उद्भवस्थानं वेदः, तर्हि वयं सर्वे जानीमः इति भारतीय ज्ञान परंपरा तु वेदतः समुत्पन्ना अभूत्। परन्तु वेदस्य यः ऋषिः अस्ति सः ऋषिः स्वयमेव कथयति, इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः इत्यस्य तात्पर्यं वेदस्य ऋषिः स्वयमेव कथयति कि अयं वेदः तु भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रारंभिकः ग्रन्थः न। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः। तर्हि अनेन वैदिक वाक्येन इदं प्रमाणीभवति यत् इयं ज्ञान परंपरा आद्यंत रहिता ज्ञान परंपरा अस्ति। द्वितीयं वैशिष्ट्यमस्ति पाश्चात्य ज्ञान परंपरा अवच्छिन्ना ज्ञान परंपरा अस्ति। अवच्छिन्ना ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा अनवच्छिन्ना ज्ञान परंपरा अस्ति। अवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना, अवच्छिन्नायाः तात्पर्यं पाश्चात्य ज्ञान परंपरा खंडिता ज्ञान परंपरा अस्ति। तत्र नैरन्तर्यं न दृश्यते, निरन्तरता न वर्तते। भारतीय या ज्ञान परंपरा अस्ति सतत गंगा प्रवाह सदृशा वर्तते, सतत गंगा प्रवाह सदृशी वर्तते। आंग्ल भाषायाम् उच्यते वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन
like Ganges. Western knowledge tradition is interrupted knowledge tradition, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा uninterrupted knowledge tradition like सतत गंगा प्रवाह। अयं प्रवाह अपि अस्मिन् प्रवाहे अपि अथवा अस्यां ज्ञान परंपरायामपि कूटस्थ नित्यत्वं दृश्यते, प्रवाह नित्यत्वम् अपि दृश्यते। सनातनी परंपरा अस्ति, अनवच्छिन्ना अस्ति। अत्र प्रवाह नित्यत्वम् अस्ति, प्रवाह नित्यत्वम्, कूटस्थ नित्यत्वम्, कूटस्थ नित्यत्वम्, प्रवाह नित्यत्वम्, कूटस्थ नित्यत्वम्। Western knowledge tradition is interrupted knowledge tradition, but Indian knowledge tradition is uninterrupted knowledge tradition. It has a continuous flow like holy Ganges, holy river Ganges, and the continuous flow is also two types. One is flowing with eternity, and another is flowing means eternity with unflowing way. Kutastha nityata means essence of this knowledge tradition has not been changed. The essence of this knowledge tradition originated from the Veda, and till now also the same essence is flowing. And what this knowledge tradition has adopted, innovated, renovated its knowledge. Therefore, the Pravaha Nityata is also there. Suppose Ganga is there, Ganga is flowing from the Vedic period onwards. Until now the Ganga is flowing, that is Pravaha Nityata. But the water is not the same. The water which was flowed in the Vedic period, the same water has not been flowed till present. But the essence of the water is flowed. Therefore, it has the Kutastha Nityata also. But Western knowledge tradition has no eternity. That is why it is not the Sanatani knowledge tradition. Western knowledge tradition has a interruption. Origin of this knowledge tradition is the Greek knowledge tradition. पाश्चात्य ज्ञान परंपराया उद्भव स्थानम के ग्रीक दर्शनम, ग्रीक चिंतन परंपरा, ग्रीक चिंतन परंपरा 600 BC, अस्य कालः वर्तते 600 BC, 600 BC, ग्रीक चिंतन परंपरा. You know the Pythagoras? He was the Greek philosopher. You know the Socrates? He was the Greek philosopher. You know the Plato? He is also the disciple of Socrates and Greek philosopher. Aristotle is also the disciple of Plato and he is also the Greek philosopher. Alexander is the disciple of the Aristotle and he is also the Greek philosopher, Greek intellectual person. Hecataeus, Herodotus, Pompeius Mela, these are the Greek philosophers and they have originated the Greek knowledge tradition, and that is the origin point of the Western knowledge tradition. After the Greek knowledge tradition, then the Latin Chintan Parampara, Latin knowledge tradition has come out. After stopping the Greek knowledge tradition, the new knowledge tradition has come, that is called Latin Chintan Parampara.
लाइटेड चिंतन परंपरा means Greek knowledge tradition has been stopped, then Latin knowledge tradition has been originated. So it has the interruption. It has the interruption. And we have so many Latin intellectual persons and like Strabo, Ptolemy, Pliny and so on. Then the dark age has come. Dark age. Dark age. Dark age means from 400 AD to Renaissance in the Europe, 1453 AD or something more. This is called Dark Age. Means Greek tradition has been outdated, Latin tradition has been outdated, then Dark Age has come. This is called Andha Yuga, and here the intellectual tradition has been totally stopped. After that, the Renaissance has come in the Europe, then the modernity has been come, and due to the effect of the modernity, the capitalism has been originated, industrialization has been originated, and then 453 AD to we can say this is called modernism. Modernism till 1800 AD. Modernism has come, and this modernism has outdated the Dark Age. So here also interruption is there. And after the modernism, young ISM, modernism, postmodernism has come. Postmodernism. Postmodernism from 1800 AD to we can say the 2019 AD till the Corona period. Postmodernism has come. And this postmodernism has destroyed the modernism, and postmodernism has been originated. In the postmodernism, we have seen the new theories like women empowerment, Stree Vimarsh, Dalit Vimarsh, Alpasankhyat Vimarsh, environmental degradation, and these are areas are coming in the postmodernism, global warming and so on. And after the COVID, then post-materialism has come. Post-materialism. 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 And postmodernism has also destroyed the postmodernism. And present period, present era is the era of postmodernism, post-materialism. Post-materialism. In this era, materialistic development should be followed by spiritual development. Materialism is also required, and we can say that spiritualism is also required. And the major concern of this era is health, Ayurveda rhythm, health consciousness, health awareness is the major concern of every intellectual. You should feel healthy, then you should be happy and prosperous. So health is the major concern of this post-materialism, and this has created the organic agriculture. Everything should be herbal, the side effects should be very less, and our materialistic development must follow the spiritual science, spirituality. And this present era is the era of post-materialistic era.
post materialistic era. So you see, this is the worldview of origin and development of Western intellectual tradition. It started from 600 BC, from the Greek knowledge tradition. Then Greek knowledge tradition is totally destroyed by the Latin knowledge tradition. Then Latin knowledge tradition is totally destroyed by the Dark Age. Dark Age means religion-centric knowledge system. Religion has become the primary concern in this knowledge tradition. Means everything should be governed by the dharma. So this is called Dark Age. And then Dark has also become outdated. Then modernism has come. And modernism has started the capitalism, industrialization, materialistic development. Then it has also created so many side effects. Like global warming has come, ozone degradation has come, climate change has come. So many diseases have been originated. Therefore, this modernism has been destroyed by the postmodernism, and the new ideas, new theories have come. That is called Istri Vimarsha, Dalit Vimarsha, Alpasankhyak Vimarsha, and so on. And after, before the COVID, this postmodernism has been also outdated. Now, post-materialism has come. Post-materialism has come. And in this post-materialism, the health is the primary concern of the all intellectuals. And in this postmodernism, the information technology is the main tool to deal everything. Information technology, IT sector, is the main tool to deal everything. Information technology has become the primary goal of this post-materialism. In postmodernism, knowledge was in the center, theories were in the center, and here the technology is in the center. And as per Indian knowledge systems, the development should be with spirituality. Your materialistic development should be with the spiritual development. So this is the post-materialism. It is the worldview of the Western knowledge systems. Means we have two wings. One bird is there. One bird is having two wings. One wing can be known as materialistic development. Another wing can be known as spiritual development. And both wings must be having the balanced, so that the bird can fly smoothly in the sky. So, materialistic development is also required, Abhyuday is also required, and Nishreyas is also required. Not only that, the Santulan between Abhyuday and Nishreyas must be there. Therefore, a person can be healthy, happy, prosperous, and peaceful. So this is the major concern of the post-materialism. The present era is known as post-materialistic era. भारतीय ज्ञान परंपरा आद्यंत रहिता ज्ञान परंपरा अस्ति। अस्याः ज्ञान परंपरायाः उद्भवस्थानं प्रामाणिक रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः वेदः वर्तते। वेदम् आश्रित्य अस्माकं पार्श्वे वाङ्मयमस्ति। कुछ करें क्या आप? क्या वाङ्मयमस्ति। वाङ्मयस्य भेदः अपि द्विविधः। एकमस्ति शास्त्रम्, अपरमस्ति काव्यम्। शास्त्रमपि द्विविधम्, अपौरुषेयम्
and Paurusheya. What is the difference between Aparusheya Shastra and Paurusheya Shastra? What is Aparusheya? Aparusheya. जो किसी मनुष्य द्वारा रचित न हो। तो किसके द्वारा रचा जाएगा? जानवर के द्वारा? जो वेद को नहीं मानते उसे, जो वेद को नहीं मानते, बहुत जो किसी मनुष्य की कृति ना हो, जो शुद्ध परंपरा से पहले से चलता आ रहा है, उसे अपौरुषेय। जैसे वेद मंत्रों के संदर्भ में ऐसा प्रमाण है कि वो ईश्वर द्वारा, ईश्वर के निश्वास से उत्पन्न है। तो ईश्वर को कौन देखा है? आज के साइंस वाले कहाँ कहेंगे? जब ईश्वर कह दोगे, ब्रह्म कह दोगे, तो तो खंडित कर देंगे, कहेंगे आपने ब्रह्म को देखा है, आपने ईश्वर को देखा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता। तो व्याघात हो गया। सुंद उपसुंद न्याय चल गया, सुंद ने उपसुंद को मारा, उपसुंद ने सुंद को मार दिया। वेद के रचयिता के बारे में पता भी नहीं, जिसका यदि पता भी नहीं है तो इसमें विवाद चलेगा ही। हाँ, अब सुनिए, अपौरुषेयम इत्यस्य तात्पर्यम देश काल पुरुष अनवच्छिन्नम ज्ञानम, अनवच्छिन्नम ज्ञानम भवति अपौरुषेयम। देश काल पुरुष अनवच्छिन्नम ज्ञानम अविशिष्टम ज्ञानम इत्यस्य तात्पर्यम इदम ज्ञानम अन्य भाषायां भवति नॉन कंटिंजेंट नॉलेज। नॉन कंटिंजेंट नॉलेज, नॉन कंटिंजेंट नॉलेज। नॉन कंटिंजेंट नॉलेज, कंटिंजेंसी होती है ना, आप लोग लेते हो, नॉन कंटिंजेंट नॉलेज। अपौरुषेय से तात्पर्य विशिष्टानाम, विशिष्टानाम पुरुषाणाम कृते ज्ञान। द्वितीयम लक्षणम भवितुं शक्यते, द्वितीया व्याख्या भवितुं शक्यते विशिष्टा, विशिष्टानाम पुरुषाणाम कृते ज्ञानम। मेरी राइटिंग जिसको ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, गलत गलत मत लिखिएगा, अशुद्ध मत लिखिएगा, रिसर्च कर रहे हो, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझसे हो नहीं पाता इस छोटे से उससे। अब बिना लिखे मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरी हैबिट ऐसे नहीं है। मेरे गुरु नहीं पढ़ाते तो मैं भी नहीं पढ़ाता। हाँ गुड। पहले ये समझो, देश काल पुरुष अनवच्छिन्न ज्ञान क्या है। इदम ज्ञानम कस्मिन् देशे, कस्मिन् देशे मीन्स कस्मिन् स्थाने समुत्पन्नम अभूत् अनवच्छिन्नम अहं वयं न जानीमः। कस्मिन् काले अनवच्छिन्न उत्पन्नम भवति वयं न जानीमः। केन पुरुषेण इदम ज्ञानम समुत्पन्नम अभूत् वयं न जानीमः। Nobody has claimed that I am the creator of this knowledge, I am the author of this knowledge. Therefore this knowledge is called apaurushaya knowledge, non-contingent knowledge, a knowledge which is not having the author, which is sarvakalikam, which is sarvatrikam, everywhere. त्रिकाला बाधितम ज्ञानम अपौरुषेय। सार्वजनीनम ज्ञानम सर्वेषां कृते इदम ज्ञानम भवति। सार्वकालिकम ज्ञानम, सार्वभौमिकम ज्ञानम। देश इत्युक्ते देश अनवच्छिन्न
विशिष्टं ज्ञानं नास्ति, अनवच्छिन्नं ज्ञानम् अस्ति, अवच्छिन्नं ज्ञानं नास्ति इत्यस्य तात्पर्यं सार्वजनीनं ज्ञानं। यू मे राइट, सार्वभौमिकं, सार्वकालिकं, सार्वजनीनं ज्ञानं। क्या देश शब्द का स्थान अर्थ है देश ही है? देश शब्द का स्थान अर्थ है या देश ही है? देश का मतलब यह स्थान होता है। देश सामान्यम स्थानम, देश इत्युक्ते स्थानम। यथा आर्यावर्त देशः अस्ति, प्रयाग देशः अस्ति, तमिल देशः वर्तते, उत्कल देशः वर्तते। देशस्य तात्पर्यं स्थानम एव, दिस इज द प्लेस। विशिष्टानां पुरुषाणां कृते ज्ञानम्। यद्यपि इदं ज्ञानं तु सार्वभौमिकं, सार्वकालिकं, सार्वजनीनम् अस्ति, परन्तु इत्यस्य ज्ञानस्य कृते श्रमः करणीयः। ये पुरुषाः विशिष्टाः भवन्ति, विशिष्टं श्रमं कुर्वन्ति, ते एव इत्यस्य ज्ञानस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुवन्ति, ते एव लाभार्थिनः भवन्ति। सर्वे पुरुषाः अस्य ज्ञानस्य लाभार्थिनः न भवितुं शक्नुवन्ति। ये सात्विकाः पुरुषाः भवन्ति, ये अधिकारिणः वर्तन्ते, एतेषां पार्श्वे अधिकारित्वमस्ति, पात्रत्वमस्ति, ते एव अस्य ज्ञानस्य कृते लाभार्थिनः एव, न तु सर्वे सामान्याः पुरुषाः। दिस नॉलेज is universal knowledge, but everybody cannot get this knowledge. For that the adhikaritva is required, for that sentient food, sentient practice, some rules and regulations and disciplines are there. If you will follow the rules, regulations and disciplines, then you are eligible to get this knowledge. Suppose you are the PhD scholar, I am imparting the knowledge upon you, but for you the patrata is there. I cannot give this knowledge for the BA students or for MA students. Even my knowledge is universal. Everybody can get the benefits, but for that the eligibility is required. This knowledge is for the research scholars, so that they can contribute something in the field of Sanskrit studies. This knowledge is not for the Makshika Sthane Makshika, which we are teaching during the BA and MA. This knowledge is the research based knowledge. It will open your eyes, it will open your mind blockage. So for that the patrata is required, eligibility is required. That is why Visishtanam Purushanam Krite idam jnanam. पुरुष इत्युक्ते सामान्यः पुरुषः, अपौरुषेयः इत्युक्ते विशिष्टस्य पुरुषस्य कृते। अत्र अपौरुषेयः कौन सा प्रत्यय लगा है? पौरुषेयः। पौरुषेयः क्या है? पुरुष के लिए, पुरुषस्य कृते। अपौरुषेयः विशिष्ट, पुरुष नहीं तो क्या? निषेध अर्थ क्या? नहीं एक ही अर्थ होता है, नहीं कि 6 अर्थ होते हैं। बिल्कुल नहीं, विशिष्टा नाम नहीं के जो है 6 अर्थ हैं। ये नहीं कहा कि ये ज्ञान हमने पैदा किया, ये ज्ञान किनके लिए है? अब फिर से समझिए, ज्ञान उत्पन्न करने की बात नहीं की जा रही। ज्ञान है किसके लिए? अपौरुषेयम ज्ञानम। अपौरुषेय कहां पर होता है या पौरुषेय क्या है? कि ज्ञान किनके लिए है? तो ज्ञान किनके लिए है? अपौरुषेय। अपौरुषेय कृते अस्ति,
विशिष्टानाम पुरुषाणाम कृते इदम इदम्। समझ रहे मेरी बात? अब पौरुषेय, पौरुषेय कौन सा प्रत्यय है? कौन सा है? विचार करें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। इसी का विभक्ति वचन निकाल दोगे, प्रत्यय निकाल दोगे तो अर्थ पता चल जाएगा। ठीक। अपौरुषेयम किमस्ति शास्त्रमस्ति। व्हाट इज द शास्त्र? शास्त्रम किम नाम शास्त्रम? जो शासन करे, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृत्येन वा येन पुंसाम उद्दिश्य तत् शास्त्रम अभिधीयते। सब रटी हुई परिभाषा बता दीजिए शास्त्र। शास्त्र मीन्स साइंस ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज और साइंस ऑफ नॉलेज। ज्ञानम तु अस्ति, विशिष्टम ज्ञानम तु शास्त्रम भवति। The knowledge which is systematically and scientifically represented, that can be known as Shastra. Scientific knowledge is Shastra. What is Kavya? Literary knowledge. Literary knowledge means knowledge which has been represented in the poetic style, in the enjoyable style, is called a kavya. Even the knowledge is the same. This knowledge, this shastra represents the knowledge which has no enjoyment, but this kavya represents the knowledge which is having the enjoyment. It means here is only the knowledge and here is knowledge plus enjoyment. Knowledge plus enjoyment. ENJOYMENT, enjoyment. That is why काव्य शास्त्रीय परिभाषा आ जाओ। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा येन पुंसाम उपदिश्येत, येन पुंसाम उपदिश्येत, पुंसाम उपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। आइए कोई लिखे इसको। प्रश्न आपका ये नहीं होना चाहिए कि सर उसकी परिभाषा बता दीजिए। प्रश्न क्या होना चाहिए? रिसर्च वालों का क्या प्रश्न होना चाहिए? सर ये परिभाषा कहां की है, ये प्रश्न होना चाहिए। क्या प्रश्न होना चाहिए? कहां की है, ये रिसर्च है। ना मूलम लिख्यते किंचित। प्रश्न का जो है कहीं कहीं पुंसाम एनोपदिश्येत लिखा है। तच्छास्त्रम, देखिए श्लोक वार्तिक। कंप्यूटर से जो हेल्प लेना है इसको पूरा प्रमाण नहीं मानना है, मेन सोर्स से मिलाना है, क्योंकि जो भी लिखा रहता है उसमें त्रुटियां होती हैं। लेकिन जो विद्वान है वो जान जाते हैं कि किसमें त्रुटियां हैं किसमें नहीं। आपकी वो पात्रता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी हेल्प लेना। कंप्यूटर में जो लिखा है वही प्रमाण नहीं है। देखिए क्या लिखा है? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, प्रवृत्ति ही वा निवृत्ति ही वा।
नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। श्लोकवादिकं शब्द परिच्छेदः। दिस इज द। तो हमेशा रिसर्चर का क्या होना चाहिए कि सर इसका सोर्स बता दीजिए, रेफरेंस क्या है। ये नहीं कि सर उसका श्लोक की कारिका बता दीजिए। आपका दिमाग हमेशा रेफरेंस पे होना चाहिए कि ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते। तर्हि श्लोकवार्तिकं केन विरचितं? कुमारिलभट्टेन विरचितं। तर्हि कुमारिलभट्टस्य इदं लक्षणमस्ति, मीमांसा दर्शनस्य इदं लक्षणमस्ति। क्या है, क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा। जो नित्य रूप से किसी काम में प्रवृत्त कराए कि इदम करणीयम, निवृत्तिर्वा जो कहे कि नहीं इस काम को नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स जो बताए। पुंसां एनोपदिश्येत। पुरुष का मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब यहां स्त्री भी है, ट्रांसजेंडर भी है। पुरुष का मतलब आत्मा, जिसके द्वारा पुरुष को उपदेश दिया जाता है। तच्छास्त्रम अभिधीयते। उसको क्या कहेंगे? अर्थात शास्त्र में क्या बताता है कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है। ये हमारा शास्त्र का अर्थात प्रवृत्ति इति शास्त्रस्य प्रयोजनम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शास्त्र? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, देन निवृत्ति। Since I am the Nayayika by heart, so I will add one more, that is called Audasinyam. Audasinyam, udasinta, Audasinyam. This is the behavior. After getting the knowledge, we have three types of behavior. One is pravritti, do's, we will do something. Another is nivritti, we will draw back ourselves. And another is audasinyam, neutrality, neutrality, we will be neutral. So three types of behaviors. One is pravritti, another is nivritti, another is audasinyam. शास्त्रस्य अयमस्ति व्यवहारः। यदा शास्त्रम् इत्युक्ते ज्ञानं, ज्ञानोपरान्तं किं भवति? ज्ञानोपरान्तम् अयं व्यवहारः भवति। तर्हि व्यवहारः अपि त्रिविधः: प्रवृत्तिः, निवृत्तिः, औदासीन्यम्। दिस इज द पर्पज ऑफ शास्त्र. So the Kavya has a knowledge plus enjoyment. Therefore, Rajsekhar says in Kavya Mimamsa, the Kavya is superior to Shastra. Kavya is superior to Shastra. Why? Kavya gives knowledge as well as enjoyment. Shastra gives only knowledge. शास्त्रस्य प्रयोजनमपि पुरुषार्थचतुष्टयं भवति, काव्यस्य प्रयोजनमपि पुरुषार्थचतुष्टयं भवति, परन्तु काव्यात् आनन्दसहितं पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु शास्त्रात् नीरसरूपेण पुरुषार्थचतुष्टयस्य नीरसेन पुरुषार्थचतुष्टयस्य सम्प्राप्तिः भवति इति अर्थः. अहं न कथयामि, काव्यमीमांसाकारः कथयति. Therefore he says, नाट्यवेदः is पंचमो वेदः. नाट्यवेदः पंचमो वेदः. अलंकारशास्त्रं सप्तमं वेदांगं. साहित्य विद्या पंचमी विद्या. साहित्य विद्या पंचमी विद्या. काव्यम पंचदश विद्यास्थान. काव्यम पंचदश विद्यास्थान.
It means the Natya Veda is superior to all the Vedas, because in the Natya Veda the essence of Rig Veda is there, the essence of Yajur Veda is there, the essence of Sam Veda is there, and the essence of Athar Veda is also there. Alankara is the seventh Anga, seventh Vedanga. In seventh Vedanga means in the Alankara, the Shiksha Vedangam is there, Kalpa Vedangam is also there, Alankare, Jyotish Vedangam is there, then Niruktam is there, Vyakaranam is there, Chanda is there. Panchami Sahitya Vidya. It means Anvichiki Trai Varta Dandanitischa. Chatasrah Vidyah Bhavanti. Anvichiki Trai Varta Dandanitischa. Iti Chatasrah Vidyah. But Panchami Sahitya Vidya iti Ayavariya. It means Sahitya Vidyaya Anvichikyah api tattvam vartate. Trayah api tattvam vartate. दंडनीतेः अपि तत्त्वम् अस्ति, वार्तायाः अपि तत्त्वं वर्तते। अतएव पंचमी साहित्य विद्या। तथैव चतुर्दश विद्यास्थानं भवति, चतुर्वेदः भवति, षड्वेदाङ्गानि, पुराणं, मीमांसा, आदिवीक्षिकी, स्मृतिशास्त्रं च इति चतुर्दश विद्यास्थानानि। परन्तु पंचदश विद्यास्थानं तु काव्यम. It means in the Kavya, the essence of Anvichiki, the essence of, we can say the four Vedas, the essence of Sarvedangas, the essence of Puran, the essence of Anvichiki, Smriti Shastra and Mimamsa, everything is available. That is why Sahitya Vidya, Kavya is the Panchadas Vidya Sthana. What is difference between Vidya and Vidya Sthana? पंचमी साहित्य विद्या अस्ति, परंतु पंचदशम विद्यास्थानम् अस्ति. तर्हि विद्या अस्ति, विद्यास्थानम् अनयोः मध्ये को भेदः इति प्रश्नः भवति. Tell me now. विद्या अस्ति, विद्यास्थान. यहाँ से वो विद्या प्राप्त हो रही है जिस शास्त्र से. अब विद्या क्या है? ज्ञान. इसको मॉडर्न तरीके से समझिए. चार स्ट्रीम हैं, चार डिसिप्लिन हैं नॉलेज प्राप्त करने का. एक तो ह्यूमैनिटीज है, दूसरा साइंस है, तीसरा सोशल साइंस है, चौथा मैनेजमेंट है. या आप उसको लागू जोड़ दीजिए उसमें. आज के समय चार जो है ब्रांचेज हैं. ठीक. इसी तरह से आदिवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार डिसिप्लिन्स हैं. और चारों डिसिप्लिन्स में अब ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, और भी चीजें पढ़ाई जाती हैं. इसी तरह से जो है साइंस में फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है. ऐसे ही आदिवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार डिसिप्लिन्स हैं. और चारों डिसिप्लिन्स में जो है जो पढ़ाया जाता है, इसको सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं. जो आपको सब्जेक्ट कहते हो आप जिसको, वो जो है कितना है? 15. अब बात समझ में आ गया? सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड विद्यास्थान. स्थान इत्युक्ते सोर्स. सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड विद्यास्थान. वी आर गेटिंग द नॉलेज आफ्टर रीडिंग द आदिवीक्षिकी or Trail or Varta or Dandiniti or Chaturveda or Shatvedanta. This is the source of knowledge. But that knowledge has four branches. One is called Anvichiki, another is Trail, another is Varta, another is Dandiniti. Anvichiki means logic, law and justice, we can say. Trail means Apaurisheya Shastra, spiritual science.
So Anvichiki, Trai, Varta and Gandhi. In Anvichiki you can add the science also, because science is based on totally logic. Okay? So in Anvichiki you can add the mathematics, you can add the physics, chemistry, information technology and so on. And what is the Trai? Trai is totally spiritual science. Adhyatma Vidya, Trai. Varta is trade and commerce, business, management. And Dandniti is the law and justice or judiciary defense. So this is the 4 branches of the knowledge, 4 disciplines of the knowledge. And in out of 4 disciplines, 15 sources are of the knowledge. Panchadas vidya sthanani vartante. Did you get the point? In this way you have to study the Sanskrit Shastra. Then you can contribute some new knowledge, some innovative things in the area of the research. Don't study the Makshika Sthane Makshika. Open your mind. Then you grasp the content. So, time is over or what? Over. One second. This one, just at least I can teach the one slide. See origin and development. At least one slide you should know. Origin and development of manuscript knowledge tradition. Manuscript is the Pandulipi. Pandulipi Jnana Parampara. Manuscript knowledge traditions. Pandulipi Jnana Parampara. तरी पांडुलिपि ज्ञान परंपरायाः उद्भवः विकासश्च. पांडुलिपि ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरायाः आधारः आश्रयः. पांडुलिपि ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरायाः आश्रयः आधारो वा. इत्यस्य तात्पर्यं किम्? भारतीय ज्ञान परंपरायाः सम्यक्तया ज्ञानं न भवितुं शक्यते यदा पांडुलिपि ज्ञान परंपरायाः ज्ञानं न वर्तते. भारतीय ज्ञान परंपरा किमस्ति? राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अत्र 2 मिनट्स. भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ इत्यस्याः ज्ञान परंपरायाः चिंतनं दरीदृश्यते राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ 2020 मध्ये. परंतु भारतीय ज्ञान परंपरायाः सम्यक्तया सुष्ठुतया ज्ञानं तदैव भवितुं शक्यते यदा पांडुलिपि ज्ञान परंपरायाः पांडुलिपि चिंतन परंपरायाः ज्ञानं न भवति. Origin and development of manuscript knowledge traditions based on IPS. पांडुलिपि ज्ञान परंपरायाः उद्भवः कथम् अभूत्? World विश्वमस्ति. तर्हि world has been converted into contingent world, that is called Buddhist samsara. Then contingent world is converted into linguistic world. This is called Bhashatmak samsara. Then linguistic world has created the intellectual traditions. Jnana parampara. We have 2 jnana parampara. One is the Western and one is the oral Indian. Western knowledge tradition is based on writing tradition. That is why the manuscript is the primary source of the Western knowledge traditions. And Indian knowledge tradition is the oral system, Shruti Jnana Parampara. So manuscript is the secondary source of knowing the Indian knowledge traditions. How the manuscript has originated? The Indian knowledge systems in the form of Vangmaya. We have a Sutra, Vritti, Vartika, Bhashya, Tika, Sopati, Panchika, Karika, and Prakarana, and so on. These writing styles have originated the manuscript knowledge traditions in India. Sutra, Vritti, Vartik, Bhashya, Tika, Sopati, Panchika,
Kalika, Prakran, and so on. These writing styles or these texts have originated the manuscript knowledge traditions in India. Therefore, we should know the manuscript knowledge traditions for the sake of Indian knowledge systems. Thank you. हिंदी बता देता हूँ, मैं लगेगा आपको समझे, इतना तो आप समझ गए। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा लिखित परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा मौखिक है। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा का जो आधार है वो पांडुलिपियां हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार तो श्रुति परंपरा है, लेकिन बाद में वो श्रुति परंपरा भी जो है वो लिखित परंपरा से जो है क्या हुआ, अभिभूत हुई, या लिखित परंपरा से क्या हुआ, अनुप्राणित हुई। और लिखित परंपरा जो पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं उनके एक प्रकार हैं, कुछ तो सूत्र रूप में है, कुछ वृत्ति रूप में है, कुछ वार्तिक में है, भाष्य में है, कुछ टीका में है, कुछ सोपद वृत्ति के रूप में, कुछ पंजिका है, कुछ कारिका है, कुछ प्रकरण ग्रंथ के रूप में। सूत्र क्या है आप लोग जानते हो, लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सागर विशतोमुखम अस्तोभम नमत्यं च सूत्रम सूत्रतो विदु। वृत्ति की भवति प्रार्थानाम, वाक्य विग्रह भवति वृत्ति, प्रार्थानाम अन्य पदार्थ से ज्ञान वेदा भवति वृत्ति भवति, वाक्यम की भवति उक्तानुक्त द्विरुक्तानाम, ना दुरुक्तानाम, द्विरुक्तानाम, दुरुक्त नहीं है वो, द्विरुक्त, द्विवारम उक्तम। चिंतायते प्रवर्तते भाष्यम किं भवति, सूत्रार्थो वर्णिते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारेण शब्दांश वर्ण्यन्ते भाष्यो विदु। टीका यथा संभव विमर्शनम, टीकलम टीका, सोपद वृत्ति, स्वकीया वृत्ति, सोपद वृत्ति, पंजिका भी संपद पंजिका, पंजिका कारिका अर्थ प्रदर्शनी, प्रकरणम किं भवति। व्हाट इज द प्रकरण? शास्त्रैः विदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ। So, thank you. I have actually done just another class of BA third year. Otherwise, I will teach you more. So whatever formalities are there here, what I have to do? Teach me. इसको क्या करें, इसमें से निकाल के आकाशदीप नहीं है, इसका नहीं दिया रहा, खत्म। इसको हटा दो। दीन बंधु, डेली यही निकलता क्या है। करूं, इसमें डाल दें, दो में आप लोग कर दीजिए। दो बार आएगा उनका। अरे पता नहीं, इसको थोड़ा सा वो जुमा वाला कर दीजिए ना, थोड़ा सा मिला दीजिए। अंग्रेजी से दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों? समझ में तो आ रहा है ना? धीरे धीरे समझ में, जो मैं लिखता हूँ ना वही समझा दीजिए। इसलिए तो अंग्रेजी कम बोल रहा हूँ। इसलिए अंग्रेजी कम बोल रहा हूँ। बस यही है कि हिंदी मत बुलवाना हमसे। हाँ,
तो आकाशदीप के लिए काम हो गया। अच्छा, अटेंडेंस लेना है। टुडे आई हैव वन लेक्चर एट जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यू ऑल आर इनवाइटेड, यू मे अटेंड द लेक्चर दैट वन। आप सभी अटेंड कर सकते हो इस लेक्चर को। 1 बजे से ही डिपेंड करता है आप को शूट करे हो। अदिति, राजेश कुमार सिंह, दीन बंधु, श्वेता सिंह, शिवरात्रि, इबरार, सुमन पटेल, आंचल यादव, प्रीति वर्मा, सरिता यादव, संपूर्णानंद पाल, आकाशदीप, विकास, प्रेमचंद, मौसम सिंह, सत्यदेव, राखी चौरसिया, राखी इज नॉट हियर, दुर्गा शुक्ला, नो, रिचा, पल्लवी, शशि शेखर, राजन यादव, संध्या दुबे, अभिलाषा पटेल, अमृत प्रकाश दुबे। इधर भी कुछ है? अच्छा अच्छा, नेहा उपस्थित आसन। नेहा, अच्छा, वर्धते हो। अच्छा अच्छा, रिया व्यापारी, प्रेजेंट सर। श्वेता पांडे, हेमा, सूर्य प्रकाश, शुभम, अमिता पाल,